everyone. This is Kriti, and you are watching the NPS Bulletin. In recent years, strong cyclones have been developing in the Arabian Sea more frequently than earlier. Annually, 5 cyclones on average form in the Bay of Bengal and the Arabian Sea combined. Of these, 4 develop in the Bay of Bengal, which is warmer than the Arabian Sea. In the Arabian Sea, cyclones typically develop over Lakshadweep area and largely traverse westwards or away from India's west coast. However, in recent years, meteorologists have observed that the Arabian Sea too has been warming. This is a phenomenon associated with global warming. Our correspondent Deepika and Pramod are sharing the similar news. Taukte, the first cyclone of 2021 developing over east central Arabian Sea, which has taken the form of a very severe cyclonic storm, is likely to intensify further during the next 24 hours and reach the Gujarat coast on Monday evening, said the Indian Meteorological Department. An estimated 1.5 lakh people are being shifted from low-lying coastal areas in Gujarat, while National Disaster Response Force and State Disaster Response Force have been deployed in the states to tackle it. While on the coastal belt of Kerala, Karnataka and Goa, Cyclone Taukte leave many people dead, damaging hundreds of houses, uprooting electricity poles and trees and forcing evacuation so far. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा है कि 2021 का पहला चक्रवात तौकते जो मध्य पूर्व अरब सागर के ऊपर विकसित हो रहा है ने अब बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया है। अगले 24 घंटों में इसके और तेज़ होने और सोमवार शाम तक गुजरात तट पर पहुंचने की संभावना है, जिसके कारण गुजरात में निचले तटीय इलाकों से अनुमानित 1.5 लाख लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। वहीं इससे निपटने के लिए NDRF और SDRF को राज्यों में तैनात किया गया है, जबकि केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में चक्रवात तौकते ने अब तक कई लोगों की जानें, सैकड़ों घरों को नुकसान, बिजली के खंभे और कई पेड़ उखाड़ दिए हैं, जिसके कारण लोग अपने घरों को छोड़ और कहीं जाने को मजबूर हुए हैं। Mars has captivated humans since we first set eyes on it as a star-like object in the nighty sky. Humans have set out to discover what Mars can teach us about how planets grow and evolve and whether it has ever hosted alien life. So far, only uncrewed spacecraft have made the trip to the red planet. Our correspondent Pramod Karnpal and Pratham Mittal are sharing the updates of similar mission. China becomes the second nation to land an uncrewed rover after US on the land of Mars. The Tianwen-1 spacecraft landed on Mars surface, which is known as Utopia Planitia. A solar-powered rover named Zhurong will study the surface soil, atmosphere and will also look a sign of ancient life. अमेरिका के बाद चाइना ऐसा दूसरा देश बना जिसने बिना यात्री वाले यान को मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक पहुंचाया। ताइवान एक अंतरिक्ष यान मार्स की यूटोपिया प्लैनेटिया नामक स्थान पर उतरा। सौर ऊर्जा से काम करने ज़ुरोंग रोवर मार्स की मिट्टी, वातावरण, पौराणिक जीवन आदि चीज़ों का प्रशिक्षण करेगा। The representative democracy requires political communication in both directions between government and people. Communication from political leaders to the public has been greatly facilitated by the developments of radio and television, but no corresponding invention has facilitated communication from the electorate to the political leaders. Letter writing may well have a more important function today in the political process. Our correspondent Deepika Bora is sharing the similar updates. Pramod Kandpal will be sharing the Hindi translation. Due to the ongoing surge of COVID-19 in India and the failure of the governments to handle all these, many open letter is being written to PM. In recent, a group of 76 public intellectuals and scholars from India and abroad have called for a halt and reconsideration of the government's Central Vista redevelopment project. In this letter, the scholars criticize the extravagant project in the midst of a devastating pandemic
endangering workers and squandering scarce resources that could be used to save lives, while the leaders of 12 opposition parties also wrote to Prime Minister seeking a free mass vaccination campaign against COVID-19 and a suspension of the Central Vista project and divert the money to aid the fight against coronavirus. भारत में लगातार बढ़ते कोविड-19 और इसे संभालने में सरकार की विफलताओं के कारण प्रधानमंत्री को बहुत से खुले पत्र लिखे जा रहे हैं। हाल ही में इतिहासकार रोमिला थापर समेत देश व विदेश के 76 बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम खुला पत्र लिखकर सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। इन बुद्धिजीवियों ने कोविड-19 महामारी के बीच फिजूल खर्ची वाली इस परियोजना की आलोचना करते हुए कहा कि संसाधन का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए किया जा सकता था, जबकि 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कोविड-19 के खिलाफ मुफ्त व व्यापक टीकाकरण अभियान, सेंट्रल विस्टा परियोजना को निलंबित करने और इस परियोजना पर खर्च धन का कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल करने को कहा है। Now moving further, our correspondent Pratham Mittal is sharing the news. Deepika will be sharing the Hindi translation. Arjun Bhullar became the first Indian origin fighter to win a world title in a top level MMA promotion. He beat Brandon Vera to become the heavyweight world champion at the Singapore based One Championship. MMA stands for Mixed Martial Art. अर्जुन भुल्लर MMA प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने। वह ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर में हुई चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन बने। This is all about today. For more such updates, stay tuned with the NPS